इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन दोनों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है अगर आप ग्रामर सीख रहे हो और साथ में आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। इसके लिए 50 टॉप वर्किंग प्रैक्टिकल टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, स्टार्ट विद बेसिक ग्रामर रूल्स। ग्रामर बहुत हॉच पॉच है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जितने रूल्स हैं उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल ग्रामर रूल्स, पहले आपको उन पर्टिकुलर ग्रामर रूल्स को सीखना चाहिए जो कॉन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जिसे आपको सीखने की ज़रूरत है। पहला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ताकि आप सेंटेंसेस को सही कंस्ट्रक्ट कर पाओ। दूसरा, आपको सीखना चाहिए वॉइस, ताकि आप पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से बोल पाओ। कभी आपको डिसेंट बोलना हो तो पैसिव का यूज़ कर लो, और अगर आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना हो तो एक्टिव का यूज़ कर लो। तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। अगर इन तीनों टॉपिक्स को आपने पहले एक बार सीख लिया तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये था स्टार्टिंग विद सिंपल ग्रामर रूल्स। जरूरी नहीं है पूरे ग्रामर को याद करना, बल्कि कुछ ग्रामर के बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें उसे याद करना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस विद सिंपल कॉन्वर्सेशंस इन ऑर्डर टू लर्न द ग्रामर एज वेल। अब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी अगर इंडल्ज हो रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रामर सीख रहे हो, क्योंकि सारे लोग आपके लिए ग्रामर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस और उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं। मतलब आपको इंस्टेड ऑफ लर्निंग ग्रामर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्वर्सेशन करते के दौरान। तो आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग आप सारे ग्रामर रूल्स को प्रैक्टिकल यूज होते हुए देखोगे, और एक बार अगर आपने इन रूल्स को यूज होते हुए देख लिया तो उसे अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करने में आप खुद को नहीं रोक पाओगे। तो ग्रामर सीखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एग्रीगेट करना वो हमारा मेन प्रैक्टिकल प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रैक्टिस सिंपल अगर आप करो, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, किसी से भी एक कॉन्वर्सेशन में अगर आप इंडल्ज हो जाओ तो उससे आपको एटलीस्ट 50 से 60 सेंटेंसेस मिलते हैं, एंड ड्यूरिंग दोज कॉन्वर्सेशंस आपको उन 50 से 60 सेंटेंसेस में एटलीस्ट 48 सेंटेंसेस सही मिलेंगे, जिससे आप अपने पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को सामने से यूज होता हुआ देखा है। आपको ज़्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होने की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू टुडे? अगर आप एक नॉर्मल ओपन माइंडेड क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज माइंडेड, एक ओपन माइंडेड। अगर आप ओपन माइंडेड क्वेश्चन करो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करो, तो आपको और ज़्यादा रिप्लाईज आते हैं, आपको ज़्यादा कंटेंट्स मिलते हैं, जिससे आप ज़्यादा सीखते भी हो। तो ये हो गया सिंपल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है लर्न ग्रामर थ्रू स्पीकिंग एज वेल। ऐसा पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि ग्रामर सीखने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड की एक पर्टिकुलर बुक परचेज कर लेनी है, या फिर नीतू मैम की, अब किसी का भी एक बुक परचेज कर लेना है। इट्स नॉट दैट। उन ग्रामर का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, देयर इज नो यूज एट ऑल। इफ यू लर्निंग ग्रामर विद डेली इंटरेक्शंस, दोज ग्रामर विल बी यूटिलाइज्ड इन योर कॉन्वर्सेशन एज वेल। बट if you're learning the grammar rules and exceptions which can never be used in your conversation, that's nothing more than clunk in your brain. So get rid of that. Instead of learning grammar through those, hyper big, vast amount of oceanic books, आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए। तो फोकस करना चाहिए टेंसेस पे, खासकर एट द टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग। आप व्हाट टेंस आर यू यूजिंग? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वन, देन लर्न अबाउट टेंसेस एंड देन यूज दोज टेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट वन इज कंबाइन ग्रामर लेसन्स विद स्पीकिंग एक्सरसाइजेस एज वेल। अगर आपने ग्रामर का कोई एक पार्ट पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आप यूज करके देखो। अगर आपके साथ लोग नहीं है, आपको वो कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं हो पा रहा है, आप खुद से बातें करो। उन चीज़ों को जो जिसे आपने सीखा है उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो आप ग्रामर पहले सीख लो, ग्रामर का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सीखो, एंड दैट टॉपिक हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन योर कॉन्वर्सेशन। अगर कोई नहीं है, देन टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू मिरर, रिकॉर्ड योर वॉइस, just do it, think in English. Okay, next one is use real life situations to learn grammar. अब real life situations में बहुत सारे ऐसे places होते हैं जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। For example, अगर आप अपने स्कूल के ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आपको hundreds of messages रिसीव होते होंगे, उसमें active voice, passive voice आपको देखने को मिलता होगा। ये कभी नहीं होगा that I'm notifying you that tomorrow you have holiday, ऐसा होता ही नहीं है। You are being notified और it is being notified to you। आप ऑब्जर्व करें, उसमें आपने एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी, इससे आपने सीखा। तो हमें ये करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दोज वास्ट बुक्स ऑफ ओशियन, हमें प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन से सीखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रियल लाइफ सिचुएशंस। तो आप ग्रामर सीख ही सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप फूड ऑर्डर कर रहे हो या टीचर से आपने कुछ रिक्वेस्ट किया है, तो टीचर जो रिप्लाई करेंगे उसमें बहुत सारे कॉन्टेंट्स होंगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दोज हैवी बुक्स, आपको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से ही ये सीखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल ग्रामर। अब ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं,
ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टॉपिक्स हैं. अब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स, आप पर्टिकुलरली सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ो जिसे आपको कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है. कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए एक्टिव, पैसिव, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी होता है. मॉडल्स भी आप सीख सकते हो, वो भी बहुत काफ़ी होता है. अदर देन दीज 5 टॉपिक्स और कोई ग्रामर का रूल ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट नहीं होता. वो सिर्फ होती है जब आप बुक्स लिख रहे होते हो, या फिर कुछ हाई लेवल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो, या फिर आप एक लिंग्विस्टिक हो, तो आप उस एरिया में आपको ये सब सीखने की जरूरत होती है. अदर देन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन, हाँ, तो ये प्रैक्टिकल ग्रामर पर फोकस करने के बाद आप रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग. जब आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, अपने आप को देख रहे होते हो, यू विल सी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. यू विल सी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर प्रोनाउंसिएशन, इन योर डायलैक्ट, इन योर स्पीकिंग, इन वोकैबुलरी, इन सेंटेंस मेकिंग, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर, इन फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स. लाइक बहुत सारे एरियाज ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत दिखेगी. जैसे if I'm recording this video and if I see my video afterwards, it'll look like really cringe content to me, क्योंकि अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. अपने आप को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसके बाद आपको बहुत सारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट दिखेंगे विच यू कैन वर्क अपॉन इन फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज लिसन टू योर ग्रामर व्यूज एंड रिकॉर्डेड वीडियोज. अब कॉन्वर्सेशन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो. इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज टॉकिंग इन इंग्लिश टू यू इन ऑन द कॉल, यू कैन रिकॉर्ड इट एंड आफ्टरवर्ड्स you can just observe your pictures, your dialect, your pronunciation about the words. ये सब आप चेक कर सकते हो अपने आप को रिकॉर्ड करने के बाद. आप नॉर्मल रिकॉर्ड भी कर सकते हो और फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करने के ड्यूरिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हो. अब बहुत सारे ग्रामर फोकस्ड स्पीकिंग क्लासेस हैं या गेम्स हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो. इन प्ले स्टोर देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच यू कैन डाउनलोड इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस योर ग्रामर. जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ बुक्स में ही जाना है. प्रैक्टिकल जब आप एप्लीकेशन से सीखोगे तो एप्लीकेशन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, आपको इसके लिए और मोटिवेट करेंगे इन ऑर्डर टू लर्न मोर. बुक्स वोंट डू इट एंड इट विल मेक यू फुल ऑफ pressurized feeling will be aggregated by you. Next one is इन ग्रामर गेम्स को खेलने के बाद आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हो या फिर बुक्स को लाउडली पढ़ सकते हो. व्हेन यू रीड अ बुक रियली लाउडली, यू विल ऑब्जर्व द कंटेंट्स, यू विल सी द सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स, यू विल ऑब्जर्व द नरेशंस, वॉइस, द कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, द formal and informal conversation. There are hundreds of things that you'll learn. So instead of reading books without using your single word, speak it out aloud. When you do this, your mouth will get comfortable with the number of words that are in the books. Next one is interactive applications. There are numerous amount of applications which can be downloaded in order to enhance your dialect, your grammar, your pronunciation, punctuation, and hundreds of other things. You can download those applications from Play Store. Applications like HelloTalk, applications like Duolingo, applications like Wacky. There are numerous. All that is required in order to learn that is that go to Play Store and download that. Next one is watch English videos with subtitles. When you observe people speaking and along with that you see subtitles going, you will observe both the things at the same time. You'll be looking at the pronunciation of the person who is speaking, you'll be seeing the number of words that are written, you'll observe the punctuations being done, you'll observe the facial expressions, hand gestures, body movement. You'll observe everything which can in future in return will enhance your communication skill. Next one is you can afterwards, after learning grammar from videos, you can break grammar into chunks. Now firstly you can concentrate on active and passive voice, and during that you can break it into multiple parts so that you will be able to understand that deeply. If you will just learn active to passive voice directly, definitions, examples and all, you won't be able to use it in practical conversation. You need to learn it tenses wise. If you learn tense wise, you will see sentences, examples as well, which can be utilized in conversation later. Next one is you can join any conversational club. If you join the club, you'll see people talking about that. If you join club or conversational group, you'll observe
people using some trending words, the words which are used a lot. You can learn that. Next one is joining conversation club. Next is ask for feedback during conversation. If you talk to anyone, observe yourself, observe the person who is speaking, and after the whole scenario, ask like, okay, in order to enhance your grammar skill. Now you can use speaking apps as well, like applications like Yoda, HelloTalk. This will help you to practice your pronunciation. You can speak slowly and focus on accuracy. Instead of speaking really fast, you can concentrate upon single sentence and observe your way of speaking. You can learn common grammar mistakes as well. Focus on errors that you commit in subject, verb, agreement, and other topics. You can use flashcards in order to enhance your phrases and grammar skill as well. You can practice shadowing technique while practicing in front of any native English speaker. You may mimic the correct grammar. You can set a specific time for that grammar learning. You can practice questions during the conversation. For example, where are you from? What do you do? You can mix formal and informal speaking during practice. You can conversation with friends in informal and formal presentations. You can use grammar checkers while writing. You can download applications like Grammarly in order to check whether you write correctly or not. Is there any grammatical issue that you do? Now you can practice writing short dialogues as well. Create a mini conversation using specific grammar topics, so that in short you'll utilize those grammar topics in your conversation. You can use podcasts in order to learn and listen to grammar. You can focus on subject and tenses first. Firstly, learn about tenses, then learn about subject, and then further you may add objects in order to enhance it. Next, you can learn about prepositions through examples. For example, in the room, on the table, and things like that. You can practice role-playing scenarios. Pretend in order to enhance it. Pretend that you're in an appointment or you're ordering food. You can use grammar textbook as well in order to enhance your exercises. Now, many textbooks include speaking prompts as well. You can utilize that. There are hundreds of grammar tutorials offline. YouTube channels give that. Instead of that, you can use them in practical life as well. Now, you can speak to a native speaker in order to practice your grammar in conversation. You can combine grammar with storytelling as well. You can correct grammar while telling people stories. You can learn idioms and expressions. You can use idioms in speeches focusing on correct grammar. You can create a challenge to speak complex sentences and make it fun. Now you can attend English workshops. Now focus on workshops, combine speaking and learning at the same time. You can use grammar rules in order to construct new sentences. You can review your sentences after you have already done it. You can check your pronunciation and punctuations while writing that grammar topic. You can watch English interviews of fluent speakers. You can observe the natural grammar being used in conversations. You can create speaking flashcards as well. One side grammar rule and second side the conversational prompt. For example, subject, verb, object. On the other side, I am going to Kolkata. Now, you can focus on grammar rules on conversation as well. Now, today I'll talk about have, has. The next day I'll talk about was, were. Now, you can describe about your last holiday using past tenses. Now, you can learn through dialogues as well in the movies. You can pause a movie and repeat what the person is saying, focusing on grammar. You can discuss grammar rules with a partner as well. You can talk about certain structures used in conversation. You can focus on transitions in speech. You can see how smoothly people move from one tense to another. You can observe that. You can speak in front of mirror while practicing self-talk. You can take speaking breaks while learning grammar. You can speak about 20 minutes in order to enhance your grammar topics. You can practicing combining short and long sentences in one conversation. You may focus on pronunciating alongside grammar. Now, correct grammar must match the correct pronunciation as well. You can learn grammar by explaining things. You can just talk about a topic for a long span of time. Teach someone a rule and then implement it in conversation. You can read conversational English text as well. You can read scripts and dialogues in order to see the grammar.